नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कह दिया एक्स एक्स इज ए रैशनल, जीरो इफ एक्स इज ए इरेशनल, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज ए रैशनल and x if x is irrational, then which of the following is true for f minus g? A 1 1 onto 1 1 but not onto but not 1 1, neither 1 1 nor onto. अभी इसका सॉल्यूशन देखो। Let's define the function h of x equal to f of x minus g of x. We need to determine the properties of h of x regarding being 1 1 injective and onto solute. First, let's write out the definition of h of x based on f of x and g of x. The function are given as f of x equal to this one and g of x equal to this one. Let's define h of x equal to f of x minus g of x by considering two cases for x. Case 1. X is a rational, x belongs to Q. In this case, f of x equal to x and g of x equal to 0. So h of x equal to f of x minus g of x minus 0 equal to x. Case number 2. X is a irrational, x does not belongs to Q. So in this case, f of x equal to 0 and g of x equal to x. So hx equal to fx minus gx, that is equal to 0 minus x minus x. Combining these two cases, the function hx is defined as hx equal to x, x belongs to Q, minus x, x does not belongs to Q. इस केस में इसके लेट्स hx क्या हो गया 1 1 and onto for x belongs to R2. Is hx is 1 1, the function f11 x1 x2 domain h of x1 equal to h of x2 implies x1 equal to x2. So h of x1 equal to h of x2 and consider the possible cases for x1 and x2. x1 belongs to Q, x2 belongs to Q. h of x1 x1, h of x2 x2. तो दोनों इक्वल लिया तो x1 x2 होल्ड्स. x1 does not belongs to Q, x2 does not belongs to Q. मतलब माइनस x1 माइनस x2 लिया सपोज. So h1 इक्वल लिया तो माइनस x1 अगेन इक्वल दिस होल्ड्स. x1 belongs to Q, x2 does not belongs to Q. मतलब ये Q के हिसाब से है रैशनल नंबर. तो इक्वल लिया तो x1 इक्वल टू माइनस x2 था. मतलब x1 belongs to Q, it means x2 must be a rational. If minus x2 is a rational, then x2 must be a rational. So x2 does not belong to, so x2 is a irrational. And minus x2 are a. So this creates a contradiction unless x1 equal to 0 and if x1 equal to 0, x2 equal to 0. But 0 is a rational, so x2 is not a irrational. x2 cannot be irrational. Therefore, there are no distinct x1 x2 such that x1 belongs to Q and x2 does not belong to Q or vice versa. And h of x1 equal to h of x2, which implies in all cases hx is a 1 1. See, is hx is a onto surjective? Yes. अभी देखो इसमें जो है onto के लिए onto के कैसे कहते हैं फंक्शन इज onto मतलब for everyone in a codomain there exists an x in a domain such that hx equal to y. Why we are really want to find x such that hx equal to y. Case 1 y is a rational here. We try to find x such that hx equal to y according to the definition of hx. X is a rational, hx equal to x. So if we choose x equal to y, then since y is a rational, x is a rational. So hx equal to hy equal to y. For any rational y, we can find rational x such that hx equal to y. Y to be irrational, मतलब y does not belong to Q. Try to find irrational x such that hx equal to y. According to the definition of hx, x is irrational, so hx equal to minus x. We want to find hx equal to y. We said minus x equal to y. This which means x equal to minus 1. Y is irrational, so minus y is also irrational. Y is root 2. Minus y is minus root 2. That is also irrational. So y equal to 0, but 0 is irrational. So this doesn't apply here. So x equal to minus 1 since y is irrational, so x is irrational. So hx equal to x minus that is equal to minus 1. It is equal to y. मतलब hx equal to y आ गया. For any irrational y, we can find irrational x, namely x equal to minus 1. So that hx equal to y. Since for every y belongs to y, whether rational or irrational, we can find x belongs to y such that hx equal to y, hx is 1. तो ऑन टू वे है और वन वन भी है. मतलब एच एक्स इज बोथ वन वन एंड ऑन टू बोथ. इसलिए एक चीज़ याद रख लेना, वन वन के लिए में यहाँ पे अपन ने क्या कंडीशन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. ये वन वन के लिए.
ऑन टू के लिए क्या करते हैं, जैसे फंक्शन है आर टू आर, फॉर एवरी स्क्वायर दैट इज वाई बिलोंग्स टू आर। जैसे यहाँ पे क्यू लेते, क्यू है ना, इस एग्जाम्पल में क्यू टू क्यू, वाई बिलोंग्स टू क्यू लिया, सो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू दिस क्यू, ये दो नंबर, सच दैट वो जो एफ फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये वन टू के लिए करते हैं, ये वन वन के लिए, अगर दोनों आगे मतलब वन 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 टू। नेक्स्ट